हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा, अभी कंटिन्यूअसली इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियो आएंगे। क्लास 11th की यूनिट 1 का मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारे ओरिजिनल नोट्स से मैं आपको दे रहा हूँ, कोई भी ऐसा नहीं है कि फेक है। यही मैंने चीज़ें पढ़ी है कि मैंने इकोनॉमिक्स में लेटर स्कोर किया था फर्स्ट ईयर में, ठीक है। सेकंड ईयर में तो चलो मेरे को लेटर मिस हो गया था, लेकिन फर्स्ट ईयर में मैंने लेटर स्कोर किया था, ठीक है। मार्कशीट भी मैंने आपको दे दिया है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं पहले क्वेश्चन से, पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 से शुरू कर रहा हूँ। नंबर 1 देखिए, डिफाइन ए कंज्यूमर, कंजम्पशन, ए प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन, ए सर्विस होल्डर, ए सर्विस प्रोवाइडर, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो ये सारे डिफाइन करने हैं, एक एक मार्क के क्वेश्चन है, डेफिनेटली आ सकते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर जो है, ए कंज्यूमर इज वन हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स, फुल स्टॉप। In other words, one who buys goods for the satisfaction of his own needs for satisfying the needs of others is called a consumer. Next is consumption means destruction of utility or using up the utility of goods and services for the satisfaction of our wants. A producer is one who produces or sells goods and services for the generation of income. Full stop. Again, comma, the person who only sells goods and services to earn profit is called a seller. Next answer, production is the process of converting raw materials into useful things. In other words, production means creation of utility. Next is when someone is involved in a job or to work for others and being paid for the job is called a service holder. Next is when a person provides some kind of service to others for a payment is called a service provider. Next is economic activities are those activities that are related to the earning of money or use of scarce resources. And then what is scarcity? Scarcity is the root of all economic problems. Had there been no scarcity, would have been no economic problem. First, in fact, economic problems implies the problems of choice arising from the fact that resources are scarce and have alternative uses. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे जहाँ जहाँ बीवीआई लिखा होगा मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिफाइन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम व्हिच इज नॉट कंज्यूम्ड। नेक्स्ट, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट इज द एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ सच एसेट्स व्हिच हेल्प अस टू जनरेट इनकम. Next, question number 3. What are the three distinct components of economics? The three distinct components of economics are number 1 consumption, production, distribution. Distribution का मतलब क्या है? It means the sharing of national income by the four factors of production: land, labor, capital and organization, as rent, wage, interest and profit. Next is mention 2 points of features. May point out 2 features of resources or means. The 2 features or characteristics of resources are number 1, these are scarce, and number 2, the resources are having alternative uses. Next question is question number 5. Define data. When any fact is represented in terms of numbers, then it is called a data. Question number 6. Give 2 examples each of qualitative data and quantitative data. Examples of qualitative data are number 1, the population figures of India in last 20 years. Number B, the per capita income in India was rupees 3,800 during the year 2004 to 2005. Examples of qualitative data are number 1, the IQ levels of different persons. Number 2, beauty of the individuals. Next is cite 2 examples each of quantitative variable and qualitative variable. Income, saving, etc. are quantitative variable, while intelligence, gender, etc. are qualitative attributes. ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2016 में ये क्वेश्चन आ चुका है। पॉइंट आउट द 2 distinctions between quantitative data and qualitative data. The 2 distinctions of qualitative data and quantitative data are as follows. Quantitative data is expressed in numerical terms, whereas qualitative data is not expressed in numerical terms. Number 2, quantitative data are absolute, whereas qualitative data are relative. Next question very very important, ये भी 2016 में आ चुका है. What is statistics? The term statistics can be defined in 2 distinct senses, singular and plural. Full stop. In plural sense, statistics means numerical facts systematically collected as described by Oxford Dictionary. Full stop. Thus, the simple meaning of statistics in plural sense is data. Few examples of statistics are number 1, the average height of 25 plus male people in India is 5.5 feet compared to 5 feet in Nepal. Over the past 20 years, India has led 54 test matches in cricket and won 61 and so on. However, any numerical information is not statistics. For example, a horse has 4 legs. Tom has rupees 200 in his pocket are not statistics. In singular sense, statistics is the science which deals with methods of collecting, classifying, presenting, comparing and interpreting numerical data to throw some light on any sphere of inquiry. तो ये रहा पूरा, मैंने 9 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट पार्ट में मैं 10th से शुरू करूंगा, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।